हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज जो भी टॉपिक्स कवर मैं करने जा रहा हूँ, ये सब आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू कवर, they all are really very relevant and you could expect questions in the examination. So I'm going to cover those kind of topics which are there in the news, whether the Hindu paper, Indian Express, whatever sources you follow. At the same time, I'm also going to cover certain basic things. तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसके साथ कॉन्सेप्ट लिंक करते हुए एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। और आज जो भी मैं एरिया कवर करूंगा वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्जाम के लिए। तो वो सारी चीजों को मैं एक एक करके बताता चला जाऊंगा। आज भी बाइलिंगुअल मोड होगा, ठीक है, और उसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, ठीक है, सही से पढ़ाई लिखाई चल रही है एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू अपियर इन द कमिंग एग्जाम, ठीक है। और जैसे मैं हर बार मैं ये बात बताया हूँ कि इट इज नॉट दैट ओनली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बट ऑल्सो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बाकी जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वहां भी जो भी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ उसके लिए भी रेलिवेंट है, इज ऑल्सो रेलिवेंट फ्रॉम देयर। अब आपके पास ये मौका है ना, दोज आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जाम, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, वो चीज है। तो वही कहते हैं ना, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, राइट। तो समय बीत जाता है, टाइम will not wait for any man, and you have the opportunity that if you want to win in the race, you have the opportunity. If you can make best use of the time and win the race, right, that memory will always there. और अगर आप वो मौका गवा देते हैं तो वो भी आपकी याद रहेंगी, लेकिन वो अलग ढंग की यादें होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन देयर। So anyway, I will start with the topic here, and let's go into the topic here. So I have given the heading here, New Frontiers of Science and Technology, right? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम जो है, emerging areas and frontiers there. We will go into those kind of topics there. So चलिए start करते हैं टॉपिक को, है ना? Let us go into the topic one by one. So our first topic, this one. What the image you are seeing that, right? And you can make it out here, right? Another aspect you can make it out there. You can see the hand gesture, DNA, right? All this visual what you can see there. So what we are talking about is a very important now, what is called extended reality. What is called as a extended reality, XR, right? So let us go into this one. ये एक नई चीज जो इवॉल्व हो रहा है, और 2024 एंड कमिंग इयर्स ये दिस विल बी वन ऑफ द very important part, extended reality. Now when we come to extended reality, it basically has two aspects. One is called AR, augmented reality, और दूसरा जो उसका पार्ट है वो है VR, दैट्स अ वर्चुअल रियलिटी। It is basically a mix of these two technologies, AR and VR, right? Augmented reality and virtual reality. What is augmented reality? In augmented reality, we basically augment our day-to-day life experiences. So there is a, in terms of augmentation of real life, what we experience, our experience, जो हम अनुभव करते हैं, with images, text,
voice, video, right? With the help of, right, यहाँ पे हम क्या करते हैं? With the help of computer or mobile apps. We use apps here, है ना? क्या हम करते हैं यहाँ पर? हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं. We use some kind of application and then we try to superimpose जो हमारा, जो भी हम देखते हैं, what we visualize either through computer or mobile phone, and with the help of the application we superimpose text, video, voice, images, graphics. That is called augmented reality. इसको AR कहते हैं. तो उसमें क्या होता है? You have application, ठीक है, in the mobile phone. So when you take the camera, ठीक है, when you take photograph or video, or when you see something, and if you use that application will superimpose the graphics, है ना? जब आप कैमरे के थ्रू देखते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू, जो ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड होता है, AR होता है, तो वो चीजों को, यानी कि आप रियल लाइफ कुछ चीजों को देख रहे हैं, आपके आसपास की जो चीजें हैं वो कैमरे के थ्रू दिख रहे हैं, बट एप्लीकेशन क्या करता है? उसमें नई चीजों को डाल देता है. यू हैव न्यू थिंग्स ऑन दैट वन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी सम ऑब्जेक्ट जो यहाँ नहीं है, जैसे मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन वो वहां पर मुझे इस एप्लीकेशन के थ्रू वो दिखेगा, जो कि वहां पर नहीं है. तो मैं सारी चीजों को देख रहा हूं, साथ में ऐप के थ्रू वो चीज को भी मुझे ये पूरे बैकग्राउंड में दिख रहा है. दैट इज व्हाट कॉल्ड AR, है ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ऑगमेंटेड रियलिटी, कि हमको, मुझे वो बैकग्राउंड, right, I am able to see. That means with the help of that application I am able to visualize certain things which are not there in the my background, but I am able to see through that application there. That is what is called AR. Now what is VR, virtual reality? So here this is basically outside real world experience, right? Here the person experience outside real world, although physically the person is here in the real world, but the person experience outside this experience, right? So here outside real world experience, right, what is something called immersive reality. The person is immersive experience. The person is immersed in that outside world thing there. Although the person is here, आप इसी जगह पे है, यही पे फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन जो आप अनुभव करते हैं वो इस जगह का नहीं होता, रियल वर्ल्ड का नहीं होता है, कुछ और वर्ल्ड का होता है. दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, है ना? आभासी बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है आभासी है, ये जो यहाँ पर जो वास्तविकता है, एक्सपीरियंस. नाउ विद द हेल्प ऑफ, राइट, you have a headset, your VR headset is there, which one plays on the eyes there. So that headset, and there will be other devices. Let's say you want to drive a car. When you wear that headset, you will see that you are inside a car and you have all the parts which you can operate, just like a normal driver will drive the car. So, but you will have that experience that you are riding a car and you are able to, move left, right. System will move it, right? System will move it. वो आपको वही अनुभव देगा कि आप सच में कार चला रहे हैं. और यू इन रोपवे या एस्ट्रोनॉमी, यू आर इन मार्स, जुपिटर, मून, और यू आर इन सम अदर प्लेसेस देयर इन एन इंडस्ट्रियल सेटअप एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क. तो वो चीज एक्सपीरियंस होता है. यू हैव अ हेडसेट एंड हियर you have a headset and other devices.
headset and other devices, right? That give that kind of experience. That is what outside real world experience, immersive experience with the help of headset and other devices. So you have a VR set, you have a VR setup is there, which takes you to the other world. तो पहले ये समझना है कि what is AR, what is VR. Now we can combine them together. This could be combine them together in something called MR, mixed reality, right? We can combine AR with VR in something called as a mixed reality. What is mixed reality? You are wearing a headset, VR set. You are having outside world experience, and at the same time, in that outside world, you are also having augmented reality. आप ऐसा समझो कि आपने VR सेट को पहना है, तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए, यानी कि आपका जो अनुभव है यहाँ का नहीं कहीं और का है, ठीक है? अब उसी वो जो आप देख रहे हो, वेर यू आर विजुअलाइजिंग विद वॉइस साउंड एवरीथिंग, जो कि यहाँ नहीं कहीं और है, अब उसी में कुछ इमेजेस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस उसी बैकग्राउंड में, आप कल्पना कीजिए कि उसी बैकग्राउंड में जहां आप वीआर को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी, जो उस दुनिया में आप पहुंच चुके हैं, यू हैव रीच्ड टू दैट वर्ल्ड एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर आउटसाइड वर्ल्ड, and there whatever you are seeing around, you have again AR, augmented reality. That things again you find new type of graphics, images, videos superimposed. That is called mixed reality, MR. Okay? So when we come across extended reality, XR, what is XR? Let's look at this image. If you see this person's image, now this is VR set. This box, what you see on the eyes, this is a VR set. This is virtual reality set. And at the same time, the person is able to operate. That means there's in this year nothing is there. But once the person has worn this VR set, is there in that seeing the entire thing there. And at the same time, in the same one, you have a DNA structure. You have something other aspect there. तो इसी बैकग्राउंड में जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वहीं पर बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, मतलब उसी में ऑगमेंट हो चुका है. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट? This is what is called as a extended reality. Yes, Apple Vision Pro MR. Yes, they're very right. I'm looking at your chat box now. Famous in previous IPL. Yes, VR headset. IPL match. Yes, that means Geo, right? Geo part of it. You are in that world. Let me demonstrate here. I'll demonstrate right now. You will see right now the demonstration. This is the box. Everyone can see this. Everyone can see this VR set. This is Geo Dive, right? So I'm going to demonstrate this thing here. So what I can do, I'm just opening the device here, right? This is what I have got the device. I'm opening the device here. You will be able to see here. This is the one. So let me just wear this device. Now this is the one I have worn. So what is happening here? In this world, I am experiencing the outside world. This is my VR set. This is from the Geo, Reliance, right? This is Reliance Geo. I have got this particular one. Now I am here. मैं तो यहीं पर हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं मैं, लेकिन जो मुझे मेरे सामने जो चीजें हैं वो अलग चीज है. आई एम इन टोटली डिफरेंट वर्ल्ड राइट नाउ.
Now what I can do with the voice, there will be voice, sound, सारी चीजें. अब मैं इसी बैकग्राउंड में आई कैन ऑगमेंट सम ऑब्जेक्ट. जो चीज जैसे मैं अगर आई एम ऑन द मून, मैं चंद्रमा में हूं, तो जो मून में है मैं वहां पर हो सकता है किसी पर्सन को मैं ऑगमेंट कर दूं. मे बी आई एम इन द मून राइट नाउ, आई एम एक्सपीरियंसिंग द, आई एम वॉकिंग ऑन द मून, राइट? सो आई एम वॉकिंग ऑन द मून. नाउ व्हाट आई डू with the help of AR, there will be another person also walking on the moon, right? That person is also there in the same place where I am right now. And now let's say we are able to interact with each other. हम लोग आपस में अगर बात कर सकें, सारी चीजों को कर सकें, that is where this the handset will help me out there. ठीक है? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो चीज है, this is the new generation which has come up. This what is the new generation, it has come up with that, right? So I have bought from the market. ठीक है, मेरे पास सारी चीजें हैं. आई हैव अ ड्रोन विथ मी. मेरे पास ड्रोन भी है. आई हैव गॉट अ ड्रोन, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आई हैव गॉट देयर. सो ये चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्हेन यू आर लुकिंग टू एनी टेक्नोलॉजी, नाउ दिस इज रियलिटी. एक्सटेंडेड रियलिटी इज नाउ अ रियलिटी, राइट? एंड दैट कुड बी द पार्ट ऑफ इट देयर, राइट? नाउ a question is that will it affect the eyes? It will not affect the eyes. But if you use any technology, right, technology has positive side also, technology has a negative side also. ठीक है? हर टेक्नोलॉजी के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं. तो यहाँ पर ये चीज है. तो ये जो पार्ट मैंने भी जो बताया है, दिस वन, राइट, व्हाट आई हैव गॉट दिस, तो इसके इट हैज इट्स ओन काइंड ऑफ लूप होल्स, है ना? इफ यू लाइक लेट्स से मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन ज्यादा यूज करेंगे तब भी आपके आंख में प्रॉब्लम होगा. इट्स अ वेरी इरेशनल क्वेश्चन कि विल इट अफेक्ट माय आईज? Manish Kushwaha, your question is same as when we use any kind of mobile phone, computer, laptop, it has some of the negative impact, right? वो वहां पर होता है. So this is where a part of it which you need to be aware of it, right? This is from the Reliance company. ये already market में available है. You can buy this one. ठीक है? This is where you have a device there with everything here. Now this is a VR set, right? Which I've just demonstrated right now. This is where the VR set comes into that. Now, in the same context, when you come to extended reality, XR, right? Extended reality, you will have a combination of not only virtual reality, but you'll also have the part of augmented reality. And that is what the future will be there in the field of technology. है ना? टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो एक तरह का रिवोल्यूशन होगा आने वाले टाइम में. ठीक है? तो ये पार्ट मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है. You will be able to see that, right? You will be able to experience that kind of thing there. This is what comes here. You have virtual reality, but you are able to superimpose everything and able to understand the part of it. So it is both the combination of VR and AR. And now if you imagine with the help of AR and VR, right? If you are able to operate on the things. अब आप imagine करो कि augmented reality, right? You are first in the virtual reality. Let me make you understand. आप ऐसा समझो, आप you are using virtual reality VR. ठीक है? Within that you are using AR. यानी कि सबसे पहले आपने वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में आप आए, फिर देन यू आर यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, और दोनों का यूज हो रहा था. दैट मीन्स साइमल्टेनियसली यू आर यूजिंग मिक्स्ड रियलिटी. ये हो गया MR. व्हाट इज MR? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड AR, ऑगमेंटेड रियलिटी. आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों को एक साथ यूज कर रहे हो. दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी. ठीक है? अब इसी में अगर if in the same thing you are able to see the real thing inside and able to operate, that means if it brings
real life thing there, and you are able to operate and handle objects similar to real life. You are in virtual, remember that. You are in a virtual world, but you are working like a real life. जैसे हम रियल लाइफ में काम करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें होती हैं, जो हम देखते हैं, अब आप समझो कि आप उसी तरह उस जगह पे हो, यू आर इन दैट वर्ल्ड, लेकिन आप वैसे ही कर रहे हो जैसे कि एक नॉर्मल आप काम करेंगे। सपोज अब इमेजिन करो आप कि आई एम राइट नाउ इन द क्लासरूम, ठीक है, तो चीजों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आई एम एबल टू इंटरेक्ट विद ऑल यू थ्रू द चैट बॉक्स, मैं लैपटॉप के थ्रू आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग ऑल द वर्क, आई कैन सी एवरीथिंग देयर। नाउ इमेजिन ये बैकग्राउंड नहीं हो, दिस इज नॉट द बैकग्राउंड। नाउ विद दिस सिस्टम एक्सटेंडेड रियलिटी, आई एम इन अ क्लासरूम, गो इनटू द क्लासरूम, मैं इस एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू मैं क्लासरूम में हूँ, और उसी क्लासरूम में ये आप सब हो, यहाँ पर यू ऑल हैव कम देयर, वहां पर डिजिटल बोर्ड है, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, द वे आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, और द वे आई विल टीच इन अ फिजिकल क्लास, जब मैं वहां फिजिकल क्लास में आके जिस तरह से मैं नॉर्मल अपने लाइफ में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, आई विल डूइंग हियर एज अ, आई एम डूइंग द नॉर्मल थिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम interacting with the people there, the students there, they all will be there. But only difference is that physically I am not there. Physically मैं वहां नहीं हूं, लेकिन वही काम मैं कर रहा हूं जो मुझे एक क्लासरूम में करना चाहिए। मैं सही वही सेम काम कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ सारी चीजों को, कि यानी कि मेरे लिए ये क्लासरूम बन गया। तो जैसे क्लासरूम में मैं कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं उठाता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं या मैं आई एम टेकिंग दिस, आई एम राइटिंग दिस वन, तो जो कुछ भी मैं नॉर्मल क्लासरूम में एज अ टीचर मैं करूंगा, वही चीज मैं कर रहा हूँ। बट अंतर ये है कि आई एम इन दैट वर्चुअल क्लासरूम विच इज नॉट रियल, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ वो रियल लाइफ जैसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हूँ क्लासरूम में, काम भी वैसा ही कर रहा हूँ जो कि रियल क्लासरूम में करना चाहिए, लेकिन वो जो सेटअप है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सटेंडेड रियलिटी। सो दिस विद द पार्ट, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी, दिस व्हाट बिकम्स एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट। इसका दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी एक साथ। So whatever so I'm doing real world where in virtual world. Here I'm there in the virtual world, virtual setup में हूँ, but I am able to act, manage like a real world. So that experience XR gives, extended reality provide that kind of thing there. और इसके बहुत सारे applications हैं. I have been always saying that you have to always look at applications. कोई भी टेक्नोलॉजी का आपको एप्लीकेशन पे जाना है, और ऑलरेडी यूपीएससी आज द क्वेश्चन ऑन एआर एंड वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पे क्वेश्चन आ चुका है, इट्स ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो नाउ यू हैव टू लुक इनटू द पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेवल। व्हाट इज नेक्स्ट लेवल? वर्चुअल रियलिटी, राइट। कैन यू गिव एनी वन थिंग, है ना, राइट, कैन एनीवन टेल मी एनी सच एप्लीकेशन व्हिच हैज कम देयर, जो अभी कभी आया हुआ है? यस, वेरी राइट, पंकज सिंह, आईपीएल वीआर हेडसेट बाय जियो, द सेम थिंग इज द वन व्हाट आई हैव शोन, राइट। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? आई एम एबल टू सी all of you, right, in the part of this. I'm looking at downstairs because यहाँ कंप्यूटर है। अगर मेरी नजरें नजरें नीचे जा रही है तो मेरे सामने कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन में से देखता रहता हूँ ताकि मेरा वॉइस और साउंड साउंड जो है वहां पे दिख रहा हो। ठीक है, दैट्स व्हाट, एंड आई एम लुकिंग एट द कैमरा, राइट नाउ इज द कैमरा। ठीक है, तो इज इट क्लियर हियर? ये पार्ट को जो है, तो ये पार्ट को ध्यान में रखना है। दिस इज व्हाट हैपेंस।
दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सआर। यानी कि जो एक रियल वर्ल्ड का चीजें हैं, दैट मीन द पर्सन, ये जो पर्सन है यूजिंग द एक्सटेंडेड रियलिटी हैज कम इनटू अ वर्ल्ड हियर, सी एवरीथिंग इज देयर with people around here, like it may be a office setup, and the person using extended reality is able to discuss everything, talk to the people, right, discuss everything, and can work the object just the moment, the way the we touch any object and work with that, all the object will also be virtual, and that way it is worked there. This is what you call as a XR, extended reality. ठीक है, with the photograph I'm trying to just depict what exactly extended reality comes into that, right? Yes. Now what comes here next one here, you are aware of this one, but before he comes to that, इसका एक और important application है, metaverse. This is what you can see is a metaverse. You all know metaverse, right? Metaverse is one of the kind of extended reality. Metaverse by Facebook. Already it is in the market, right? Metaverse is already there in the market, which create this kind of communication. You can communicate, you can create your avatar, or you can create yourself in that virtual world and can do the all the interaction part of it. ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है. Already this kind of technology has come to the market, right? VR was there, AR has come there, but at the same time, now it has come into extended reality. One good application is metaverse. So now if you look at the application part, the applications of this technology, we can, day-to-day life, right? We can have this. Like for example, this one, video gaming, right? It can be in the field of education, right? Smart class, or we can say here, we can create this smart class with the students and everything, and we can discuss that. Even it could be in healthcare, right? Let's say, for example, training of surgeon, और मैंने क्लास में बताया था गगनयान मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कैन बी इन स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट, whereas Gaganyaan you take any kind of thing. There we can use extended reality. Then coming to here, industry. Again, you have freedom there. So industrial application, again, particularly here, training and working on devices there, on machines and the devices. Let's say manufacturing industry there. There we can use it. Entertainment industry, like here. Right, in terms of better view, right? Whether it's a cricket match, IPL, or any kind of OTT or whatever you come across, all this can be done there, right? All this can be experienced in that kind through extended reality. So that means it can have hundreds of applications. इसके कई applications हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान में रखना है. You have to always and always remember that this could have several applications there.
मेन चीज क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि एक्सआर होता क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया मेटावर्स, इवन कुड बी फॉर मीटिंग डिस्कशन, even we can have for tourism, right? You can create that kind of environment that you are in the forest and you are seeing the tiger or different wildlife plants without being into the forest, but you are having the same experience of a forest and you are walking, experiencing the same aspect of a forest. That could be done. Archaeological site, monuments that you can be experienced through that. So all those kind of things can be done through extended reality, which will be mix of both AR and VR.